Good morning, everyone. Today we will start physics. We will start with the first chapter of physics, motion. So before starting motion, we should understand what do you mean by physics. We know that physics is the branch of science. It is the study of energy and matter in space and time and how they relate each other. Physics extend well into our daily life, describing the motion, forces, and energy of ordinary experience. In action, such as walking, driving a car, or using a phone, physics is at work. ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम देख नहीं सकते, फिजिक्स है. Like, we know that everything in this nature, when we throw it upward, it comes down because of the force of gravity. हम किसी भी चीज़ को जब ऊपर फेंकते हैं तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे अट्रैक्ट होती है, विच इज़ अ फोर्स. लेकिन हमने वो फोर्स देखी नहीं है. सो द स्टडी ऑफ दैट फोर्स कम्स अंडर फिजिक्स. In the same way, whenever we are pulling the door or pushing a ball, it starts moving. That is also due to the force, but we haven't seen that force. So the study of that things which we have not seen, but experiences only. That all the things concerned with physics. Now, coming towards the chapter motion. Before starting motion, we should understand what do you mean by reference point. Reference point is a point with respect to which a body changes its position. It's called reference point or origin. Reference point वो point है जिसे हमने let कर लिया है और उसके respect में हम किसी भी चीज़ की position को बताते हैं. For example, our house can be a reference point. Our school can be a reference point. कोई भी ऐसी चीज़ जो मूव नहीं कर रही है, फिक्स्ड है, हम उसे रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं. नाउ व्हाई देयर इज अ नीड फॉर अ रेफरेंस पॉइंट? देयर इज अ नीड फॉर रेफरेंस पॉइंट बिकॉज टू डिस्क्राइब द मोशन. वी कैन नॉट डिफाइन द थिंग्स एक्सेप्ट रेफरेंस पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, let us consider a bus is moving and a person is standing at the bus station. So the person will say that yes, the bus moving, but the person who is sitting next to him in the bus will not say that the other person is moving. जब कोई बस चल रही होती है तो बस स्टेशन पे खड़ा एक आदमी ये बोल सकता है कि बस चल रही है या मूव कर रही है, लेकिन बस में उसके साथ ही बैठा पर्सन ये बात नहीं बोलेगा. ही विल से दैट नो, द पर्सन इज एट रेस्ट. सो द रेस्ट एंड मोशन थिंग्स आर रिलेटिव टू ईच अदर. दोनों ही एक रिलेटिव क्वांटिटीज है. मीन्स किसी एक चीज के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज मूव कर रही होती है और दूसरी चीज के रिस्पेक्ट में पहली चीज मूव नहीं कर रही होती. दैट इज वाई देयर इज अ नीड ऑफ रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम किसी भी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं या किसी भी बॉडी के मोशन को डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू स्कूल, देन वी कैन से दैट यू आर इन मोशन बिकॉज यू आर चेंजिंग योर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू योर हाउस. जब भी आप अपने स्कूल के साइड जाते हैं तो आप मोशन में हैं. क्यों? क्योंकि आप अपनी पोजिशन चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू योर हाउस. So, now let us define motion. What do you mean by motion? A body is said to be in motion when it changes its position with respect to a stationary object taken as a reference point. किसी भी चीज़ को मोशन में तब माना जाता है जब वो अपनी पोजीशन चेंज करे with respect to a reference point or origin. For example, when the position of a car changes with respect to a stationary object like house, we will say that car is in motion. Now, all the physical quantities in physics are divided into two parts. The two types of quantities are, first is scalar quantity.
Now, what do you mean by scalar quantity? Scalar quantities are those which have only magnitude and not direction. Now, what do you mean by magnitude? Magnitude means any numerical value. कोई भी numerical value जैसे 1, 2, 3, 4, 5, these all are numerical values. तो ऐसी कोई भी quantity जिसमें सिर्फ magnitude होता है, direction नहीं, उसे scalar quantities कहते हैं. जैसे distance. We used to say that we have covered a distance of 4 kilometer, 54 kilometer or 40 kilometer, but we will never describe direction with distance. कभी भी हम direction को define नहीं करते distance के साथ. So we can say that distance is a scalar quantity. In the same way, next quantity is physical quantity, vector quantity. Vector quantities are those which have magnitude as well as direction. ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल फोर्स के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है. फॉर एग्जाम्पल वी यूज टू से दैट वी हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और इन अपवर्ड डायरेक्शन और in the direction of east, west, south, north. We always used to define the direction with the force. जब भी हम force लगाते हैं, then we know that in which direction we are applying the force. हमें पता होता है कि हम किस direction में force लगा रहे हैं. तो force एक vector quantity है which has magnitude as well as direction. Thank you.